चलते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। It would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi, this honorable court was dealing also with two orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had You read out that portion. Yes, my lord. The citation ki dobara batane. This is, my lord, PLD 2008 Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And the relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is there a citation? PLD 2008 Supreme Court 735. That's 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My lord, from there, we immediately, I have already given your lordship a chronology. We immediately move to the What is the significance of the chronology? My lord, the chronology is just to facilitate your lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है document. जी, we have given. वो mark कर दीजिएगा. I don't agree. जी. So this is the chronology, my lord. Insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my lord. Your lordship You want to knows the launch reason. an attack, or you were drawing the attack? No, my lord. My submission is based on this, that the submissions which your lordship have heard, in order to save your lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your lordship. The controversy significantly narrows down. If your lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in one paragraph, and paragraph 10 is important. The lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. The finding is in paragraph 10. And I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My lord, I want to say that the High Court is saying that if so far as the facts before the commission are concerned, we will not go into that facts. So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere. मुझे थोड़ा contradictory लग रहा है. My lord, is it my imagination or what is it? My lord,
In a sense it is, and I'll show to your lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here, they are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order on the basis of which it was declared that they are not eligible to assemble. The High Court does not engage with any of the facts. They accept those as correct, and they say if the commission had jurisdiction, okay, got that's it. the end of the matter. My lord, your lordship may turn the page. Paragraph 11 on page 8, I have highlighted the relevant portion, and I move on, if your lordship may then move on to the next relevant paragraph, which appears on page 13. In the middle of the paragraph, they say that the case of Salahuddin Tirmizi is not applicable. I have shown to your lordship that it is, and how it is. What is the reason given? My lord, the reason they give is that the petition filed by Mr. Umar Aftab Dillo and others in the Lahore High Court, they do not at all engage with WP 81171, which was with respect to the first round. However, as shown by your lordship, that was a fact which was before them. जवाद हसन साहब की जो ऑर्डर है वो पिटीशन का क्या नंबर है? 287. That's the one they engage with. 287 पहले फाइल हुई थी या 5791? 287 is subsequent. What was earlier was 81171. They don't mention that at all. क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो किया अपनी पिटीशन. जी बिल्कुल डिस्क्लोज किया है, but under your according to your lordship's judgment in the Salahuddin Tirmizi's case, they were obliged to deal with that petition. नहीं तो वो समझे शायद एक ही पिटीशन थी लाहौर वाली, क्योंकि यहाँ अर्लियर इन टाइम था तो ये कंटिन्यूटी हो रही है. मगर अगर वो अपने ऑर्डर में तस्करा करते कि जी नहीं इससे भी पहले एक पिटीशन थी तो शायद उनका फैसला बदल जाता. Absolutely correct, my lord, and that was pointed out to them in oral submissions, and that was okay. वो अब आप देखिए ना, अगर आप ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि अगर आप पिटिशनर के वो जो ने पैराग्राफ 33 पढ़ा था उसमें रेट पिटिशन का उन्होंने नंबर नहीं दिया. That's correct, my lord. जज साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ही पिटिशन है, maybe को ये नहीं पता था कि 3 पिटिशन थी लाहौर. That's correct, my lord. That's correct. क्योंकि अगर वो नंबर दे देते तो फिर तो बात फिर कॉन्शियस डिसीजन हो गया. So, if I was a judge, I could have also committed the same mistake. ये तो हो गया क्योंकि पहले वाली इधर आए थे ये. I don't know, number उधर नहीं लिखा उधर. My lord, so far as my instructions are concerned, the counsel appearing for the Election Commission of Pakistan in his submissions had provided the number, but the record over here in terms of the judgment doesn't disclose it. My lord, if your lordship turns to page 18 now, the question is identified. In paragraph 19, the question is identified, and that's highlighted. The moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe, and adjudicate the intra-party election dispute of procedural impropriety in the matter in the election process of a political party. Then the last 3 lines, the verbiage of section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of the section 209 of the Election Act that a political party shall within 7 days from the completion of intra-party election submit a certificate signed by office. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of commission to publish the certificate. That's it. So they say we do not need to go. आपका कहना है कि certificate is a culmination of things. Yes. In fact, even things follow. उनका कहना है ये नहीं, सर्टिफिकेट आ गया, आप हमारी इंटरनल मामलों में झांके मत. जी सर. Sir, if that were the case, then the ECP really has no power under 215(5) to take any action in any case at all, because all that is required is a certificate signed by the party that we have held an election and following are our office bearers. Whether the election has been held validly, constitutionally, in accordance with their constitution. एक सवाल रह गया. Sir. ये जो कंप्लेंट आपके पास आई 14 कंप्लेंट्स, My lord.
पहली दफा जो आपने नोटिस दिया था 2021 में, वो भी कंप्लेंट्स आई थी या वो आपने भेजा था कि इलेक्शन का टाइम हो गया है? Sir, we had very initially we had 2021 very initially we had ourselves written to them without any complaints. Without any complaint. We had written. इस दफा कंप्लेंट्स आई? जी सर. We had डिफरेंट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आई है, वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं दे रहे हैं. Sir, that's correct, sir. ठीक. So can you say there's different lists than the Lahore High Court, because the list in Lahore High Court pertained to not holding of elections, and the list in Peshawar High Court pertains to not holding of proper elections. My lord, can you distinguish them or no? My lord, on the 2021 show cause notice, there was no list. They said, give us time, give us 1 year. We gave them 1 year. The list started with the order of the Election Commission of 23rd June, where on the basis of complaints and on its own findings, the Commission said that this 23rd जून का ऑर्डर उन्होंने कहाँ चैलेंज किया? उन्होंने वो ऑर्डर जो है वो लाहौर में चैलेंज किया. That's WP 81171. जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, तो पेंडिंग है अभी, वो पेंडिंग है. तो मुझे अगर कल वो अगर उसको मान लेते हैं इनकी बात. सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है, अहम तरीन समाअत है, और अहम खबर यह है कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया है. इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मजीद तोसी नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है. उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मजीद तोसी नहीं होगी. उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मजीद तोसी नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त समाअत जारी है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी फैसला होना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से वक्त ख़त्म हो गया है. इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाज़े कर दिया है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मज़ीद तोसी नहीं होगी. और इससे पहले यह भी खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ नज़रिया का जो इंतखाबी निशान है उस पर अपने उम्मीदवारों को कहा था, कौमी और सूबाई असम्बली को, कि वो जाएं आरोज के पास और बल्लेबाज का निशान उसके लिए अप्लाई कर दें. तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये नहीं हो सकता और ये धोखाधही में आएगा, क्योंकि पहले जब एक चीज़ हो चुकी है बल्ले के निशान पर जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, तो अब वो निशान अगर अपना चेंज करना चाहते हैं, दूसरा निशान लेना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से कवायद ज़वाबित के मुताबिक नहीं होगा और इसको ना किया जाए. आरोज को ये हिदायत की थी. इससे मुताल्लिक एक दरख्वास्त भी PTI ने दी थी और इसी असना में जो वक्त था 7 बजे का वो ख़त्म हो गया. इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्ररा वक्त है 7 बजे तक का, ये वक्त ख़त्म हो चुका है और इसमें मज़ीद तोसी भी नहीं होगी. अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी जारी है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने वापस दिया था, उसके खिलाफ एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और उसी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है. इलेक्शन कमीशन के वकील भी अपने दलाइल दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी अपने दलाइल दिए हैं, दूसरी तरफ अकबर बाबर के वकील ने भी अपने दलाइल दिए हैं. उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्ररा वक्त आज शाम 7 बजे तक था और ये वक्त अब खत्म हो चुका है और इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मजीद तोसी नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है. इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी की है कि रिटर्निंग अफसरान किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान न दें. इलेक्शन कमीशन का ये हुक्मनामा PTI का प्लान B सामने के बाद जारी किया गया है. इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है. इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा है कि एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता. ऐसी दरखास्तें मौसूल हुई हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है. ये इससे पहले खबर आई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान B पर अमल करना शुरू किया था और बल्लेबाज के निशान के लिए अपने उम्मीदवारों को कहा था कि वो जाएं और बल्लेबाज का निशान लें. तो इस पर वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी की थी रिटर्निंग अफसरान को कि किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान न दिया जाए.
इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्मनामा PTI के प्लान B के सामने आने के बाद जारी किया था और उसमें यह वजाहत की गई थी इस हुक्मनामे में कि इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता और ऐसी दरखास्तें मौसूल हुई हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। वक्त ख़त्म हो चुका है उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर यह भी बता दिया है कि इस वक्त में तोसी भी नहीं की जाएगी। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of absurd provision of law. My lord, if Find that word very offensive. my lord, this honorable court and the high courts can either hold a law to be valid or a law to be invalid, being in violation of the constitution. It cannot, without holding a law to be invalid, hold that the law is absurd. That means If it was striking it down, it could be held. yes, Maybe. yes, my lord, yes. Not very legal language, but okay, acceptable. So when they are not striking it down, to not to follow it on the basis that it is absurd means that they have not found it in violation of the constitution, because if they did, then they should have struck it down. Yes. But if they did not, then they have to follow it. The High Court has to apply the law then. It can't simply walk away from the law saying it's absurd. ठीक है, ये आप वो कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन हमने नहीं मांगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो एक इनबिल्ट implied term है, उसका क्या कहेंगे आप? My lord, the submission is that even if they have not sought a declaration, in view of this reasoning of the Peshawar High Court now, what is left in subsection 5 of section 215? Can subsection 5 of 215 be applied in any case from now on till any time in the future? What's the answer? The answer is no. If the party has given a certificate that elections have been held, the Election Commission has no authority to examine whether the elections were in accordance with the constitution of the party or the law. The certificate of the chairman of the party or secretary general of party, whoever is the competent authority, will suffice. That will be the end. That will be the end of the authority of the Election Commission. The only way in which the Election Commission will be able to invalidate an election is if such a certificate is not given. एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, एक तो होता बाद में इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप जल्दी जल्दी चीजें कर रहे थे, ये वो आपको ऑर्डर मिला और इंटरिम इंजंक्शन का उन्होंने ऑर्डर लिया या नहीं मिला? वो जो पेशावर वाली हाई कोर्ट का, एक वो बता दें। और दूसरी बात ये है कि ये इतने अरसे से आप